ठीक है, तो कल यहाँ तक तो हो गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 279, और ये सितंबर 23 का पेपर है। ठीक है। When using a k-neighbors classifier in scikit-learn, consider the following scenarios and which of the following statement is correct. तो अगर हम नेबर्स बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं तो अंडरफिटिंग होता है, ठीक है। अगर बहुत ज्यादा कम कर देते हैं तो वो नॉइसी डेटा को डिटेक्ट कर लेता है। बट व्हाट वी नीड इज एन अप्रोप्रिएट और कोई बीच का नंबर जिससे वो बेस्ट डिटेक्ट करे। तो एन नेबर्स का यही रोल होता है। आप ये भी देख लो, इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ वैल्यू जनरली लीड्स टू अंडरफिटिंग, ये अभी जस्ट बताया। ये ठीक है। नहीं नहीं, इंक्रीजिंग लीड्स टू ओवरफिटिंग। हाँ ना, क्या इंक्रीजिंग में एन नहीं, अंडरफिटिंग अंडरफिटिंग ही होगा ना। इंक्रीजिंग अंडर फिटिंग होगा। करेक्ट करेक्ट, सॉरी। हाँ, दैट्स वाई। तो और जो अगर हम डिक्रीज करें तो वो सेंसिटिव डेटा को या नॉइसी डेटा को डिटेक्ट करता है, क्योंकि अगर आउटलियर मेनली आउटलियर्स को डिटेक्ट कर लेता है और उसके बेस पे गलत आउटपुट दे सकता है। तो ये चूजिंग अ स्मॉल वैल्यू वाला है ये ऑप्शंस। You know, if first one is correct, second अरे तो option should सेकंड वन इज also आल्सो be correct. करेक्ट ना। ना Yeah, ना that, मतलब दैट इज नॉट गारंटेड ना। दिस इज गारंटेड कि अगर हम उसको इंक्रीज करेंगे तो अंडरफिटिंग हो जाएगा, बट दिस इज no, नॉट it is. नहीं गारंटेड। नहीं, I think डिक्रीजिंग it लीड्स is. टू ओवरफिटिंग इज आल्सो करेक्ट। Yeah, it is the opposite, right? I also felt like that. Yeah. ओके It जस्ट अ is it is सेकंड। the opposite, right? Increasing over underfitting and yeah. ओके, बट अगर नॉइस हुआ जो थर्ड पॉइंट है फिर वो उस पे आ जाएगा ना। ओके, लेट मी चेक। हाँ मैं भी वही चेक कर रहा हूँ। स्मॉल वैल्यू विल नॉट रिजल्ट इन नॉइजी डेटा, इट विल रिजल्ट इन लेस नॉइजी डेटा बिकॉज ओवरफिटिंग की वजह से नॉइजी डेटा का फायदा नहीं। आई थिंक 2 एंड 3 में गड़बड़ है। 96 वाला करेक्ट, 962 इज रॉन्ग। ना ना, नॉइजी तो होगा ना, नॉइजी डेटा को डिटेक्ट करेगा, क्योंकि अगर अरे यार, अगर ओवरफिटिंग हो रही है तो नॉइजी डेटा कैसे होगा? हाँ If you have a small value of n neighbors, it leads to overfitting. Overfitting means noise will be discarded. ओके हाँ ओके। नहीं, मैं वही कहने वाला था कि आप लोग वो जो थर्ड स्टेटमेंट है वो थोड़ा सा गलत इंटरप्रेट कर रहे हैं। उसका मतलब ये निकल के आ रहा है कि वो मॉडल सेंसिटिव है नॉइजी डेटा के। इसका मतलब कि अगर गलती से वो मॉडल को सेंसिटिव डेटा नॉइजी डेटा चला गया तो वो डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। उसका मतलब वही निकल के आ रहा है। चलो, मैंने यार देखो, कल मैंने तुम लोगों को करेक्शन भेजे थे, भेजे हाँ। थे ना, उसमें ये लिखा हुआ था। तो तुम सब वो वाला लिंक खोल के देख लो। Sensitive to noisy करेक्शन data. I mean, small value of n neighbors should lead to overfitting, right? So overfitting means that noisy data, like with small change in noise, the model will also give a different prediction, right? It won't give like, so that I think the third option is correct, but second also should be correct. ओके, सो Yeah, लेट I also feel first, second, third all should be correct. ओके। Anuj, you have that link from yesterday? यस, आई हैव टू चेक। Like नहीं है small तो कोई value बात of नहीं, n मैं फिर से neighbors. ढूंढ लेता हूँ, मैं फिर से ढूंढ लेता हूँ। गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आई विल सर्च फॉर इट। No, I have. Wait a second, just I'm shutting this down. And Like small value of n neighbors, when the value of n neighbors is small, the model becomes more flexible and less reliant on the local structure. This can lead to underfitting, where the model fails to capture the underlying patterns in the data. ठीक है. Large values में again the model becomes less flexible or heavily relies on local structure of the data. So this can lead to overfitting. oh no, this. I always get confused, like, but if the first option is either the first option is fully, if the first is correct, second is also correct, or both are not correct, like that is there. Like I get confused to which is underfitting, which is overfitting. Okay, let me check. This is question number 270. 279. Okay, okay, my bad, but ये वाला तो उस पे ही खोलना पड़ेगा।
Like I just try to remember, is there any logic why, like when you look at more people's data, like how it works, like Okay, why is it? the correction that is given is that ABC all three are correct. Yeah. हाँ It's in तो the सही very है end, फिर very end, our very logic end. is correct then. Yeah, our logic is correct. No, I just wanted to ask, like, how do we actually say that? Like, if we, is there any logic why we say that uh, when we increase the number of people who we are looking at, it is underfitting, right? Or yeah, Why don't you take an example? Take 10 numbers, mark them as 1, 1, 2, 1, 2, 2, 2, 2, 2, and so on. okay, Okay, take 7 twos and 3 ones. Okay, and nearest neighbors has to be equal to 4. What do you think the answer will be every time? okay. I didn't catch the data. So your thing is that Take 7 points with 2, class 2, 3 mm, points with class 1. Okay, okay, yeah, yeah, now have a model where nearest neighbors is equal to 4. yeah, So okay. what will be the answer for any point? Yeah, it will always be okay, okay. So now it's overfitting. Okay, okay. It will not be for all points, but for most points it will be 2, because the number, if I make the nearest neighbors equal to 7, Only for then even it will for always be 8 2. also mostly it will be, yeah, Yeah, it will 7, 8, 9, 10, all of them 2 will be the answer. Till yeah. 6 there is a chance that 1 could be the answer, but after 6, 7, 8, 9, 10, all of them 2 will be the answer. So as the number of neighbors increases, you start underfitting. Okay. Yeah, that is underfitting because you're always predicting to. Okay, okay. Hmm. Okay, fine, fine. Thank you. Okay, so this Okay, तो ये अनुराग भी नेक्स्ट correct है क्वेश्चन पे चलते हैं. and this one is incorrect. Next question is ये तो चलो पुराना वाला क्वेश्चन है कि Yeah, एस्केलर में कर्नल कौन कौन से होते हैं. दिस इज थ्योरी क्वेश्चन. पॉली और अभी कौन कौन सी वैल्यू एसवीसी में कर्नल में आती है. लासो तो वो होता है ना पेनल्टी टर्बो. हम्म पेनल्टी होता है. वैसे भी L2 लिखते हैं, लासो कहाँ लिखते हैं उसको. वो रिज और लास्ट होता है. हाँ वो लिखते ही नहीं है वो. But I guess scale is not. Scale का no idea. I think that is not a kernel itself. Scale, या No, no, not just only kernel, but I don't think so ये कहीं की वैल्यू मतलब कि it's कोई not भी kernel. पैरामीटर उसका वैल्यू ले सकते हो. तो ये भी बहुत ठीक है. ये तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, याद रख लीजिएगा. ओके. यस, तो आगे बढ़े. हम्म. किसी को कोई भी दिक्कत हो डाउट हो तो बोल दीजिएगा. प्लीज सर एक सेकंड जस्ट. Okay. So what's the question? Which of the following will be selected in X selected from X? वो सिलेक्ट के बेस्ट लगाया उन्होंने और के इज इक्वल टू 3 कर दिया. Okay. So select K best में यहाँ 3 लिख रखा है, मतलब 3 कोई सिलेक्ट होंगे. ठीक है. And depends on P value select होते हैं ना. And we can check in arc shot कि अगर 3 बेस्ट होंगे तो एक तो I ये think सिलेक्ट होगा. lowest मेरे ख्याल से lowest p value select होता है, हाँ and highest score and lowest value. हाँ. Yeah, highest score and lowest pay value. अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ 0 आर्क शॉट में डायरेक्ट देख सकते हैं ना. तो ये 0 वाला होगा, 1 वाला होगा, 2 वाला, विच इज द लास्ट वन की एक प्रोलाइन होगा. 1 2 3 4 लास्ट से फोर्थ. 1 2 3 4 एक कलर इंटेंसिटी होगा. एंड 1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 तो एक टोटल फिनॉल्स होगा. टोटल फिनॉल्स, कलर इंटेंसिटी और प्रोलाइन. तो So scores is not relevant at all. This question was asked, I think, first quiz or
Yeah, it's asked before. Yeah, It was there in one of the quiz. Okay, so proline in color intensity तो ठीक है, but how फ्लेवोनॉइड्स the कैसे है? हाँ फ्लैवोनॉइड्स कैसे है? वो 6th नंबर पे है। तो सीधे सीधे देखो ना उसको, उसको छोड़ो, तुम ये नीचे देखो, पहले एसकेबी स्कोर देखो, ऊपर जाओ, ऊपर एसकेबी स्कोर देखो, 109, 16540 हाँ, and what is the third one? 16,000, 109 63 है and वो। 63. हाँ ठीक है, अब इनकी Right. इनकी लोकेशन ढूंढो। हाँ 63 तो 7th, तो फ्लेवोनॉइड्स इज 7th। ओके हाँ, ठीक है, बट ये हो तो गया। फिर आर्क शॉट वाला क्या होता है? इससे क्या क्या? देखते हैं फिर हम? ये जो लास्ट वाला थिंग है जिससे मैं देख रहा था, p values dot arc shot. या Yeah, जहां तक मुझे पता है 1296 इज द आंसर। yeah. So p values are the list, right? So the ordering based on the या तो argument. 0 So 1 the 2 इज highest द आंसर ना। index is at 12, तो right? 0 1 is to answer ना, so 0 and 2 तो है उधर, so most probably 1 1 भी भी होना तो है चाहिए। ना, नहीं है 1 1 नहीं पहले है। इसकी 63 है। पेयरिंग बनाते हैं ना, स्कोर और पी वैल्यूज की, जो बेस्ट होता है उधर से लेते हैं। नहीं नहीं नहीं, Okay. स्कोर एंड पी वैल्यू आर कॉम्प्लीमेंट्री, दे विल ऑलवेज बी इन द सेम ऑर्डर। बट देखो, अगर ये वाला देखो कि जो 1 है, आइदर आइदर देयर विल बी मिस्टेक कि ये 1 और 11 इंटरचेंज हो गया, क्या हुआ कि नहीं, जैसे अगर हम स्कोर का अच्छा देखेंगे अच्छा, तो एक मिनट, जो थोड़ा 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 सा ऊपर जाओ, वहां रुक जाओ। हाँ डोंट हाँ डोंट मूव द स्क्रीन, डोंट मूव द स्क्रीन। ओके, सो दैट इज 1 2 3 4 5। अरे यार, बस एक्सपीरियंस। 1 2 3 4 5 6। ओके, तो ऊपर है 6 8 0 4 1 4, so 4.05 raised to -4, minus 14.40 0. So it's taking the highest SKB values. No, it's taking the highest SKB P values also. 0 दे रहा है। नहीं नहीं नहीं, आई you are गेस right. आरिबा के पास इसका एक्सप्लेनेशन है। आरिबा बताइए। P value मैं ये should कहती be हूँ, जैसे low. P P value value और low स्कोर means में the हम oh sorry. ग्रुप बना सकते हैं ना, जैसे 6 और 6 में 63.33 और 11 का ज्यादा स्कोर बेस्ट है इन कंपैरिजन टू 15.62 और 1 के। ओके, 1 2 3 4 5 6, so या ये दोनों मेरे और हिसाब ये से I'll tell you the mistake you are making. 1296 is the answer. 1296 is the ना ना answer. ना 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 ना, जो यहाँ पी आर्क शॉट होता है, ये क्या करता है, जो सबसे छोटी वैल्यू उसको 0 कर देगा, जो सबसे बड़ी उससे ऐसे बढ़ाता जाता है, जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो सबसे बड़े नंबर से डिनोट होगी। सो 0 1 2 इज द आंसर, बट यहाँ पे कुछ एरर है 1 और 11 में। आई No, गेस इसको 1296 are the कॉम्प्लीकेट। lowest values. 1296 are the lowest values. You can check it. 12 is proline, 9 is 12, 11, 10. 9 is color intensity, and 6 is flavonoids. You can check it. 1296 जो शुरू के 3 values है वो correct है. So scores is not checked at all. Scores is checked. Scores will. That's what I'm saying. Now, see, I'll tell you. Now, Anuj, don't move anything. I'll show you. 63.3 is flavonoids. Okay. 109 is color intensity, and 16540 is proline. Okay. Now look at SKB p values. SKB p values. Okay, is 12 is equal to 0. 12 is 0, right? 12 is 0. 12 is not 0. Yes, it is 0. लास्ट वाले का 0 है। ना ना सेटल करना है। ना, बट इज वो नहीं बोल रहा है जो अनुपम सर, आई थिंक यू आर टेकिंग इट रॉन्ग, बट जो इसका बता रहा है, दिस वैल्यू वट एवर दिस वैल्यूज, इसकी पोजीशन लिस्ट में 12th नंबर पे आ रही है, ऐसा। अच्छा, ऐसा बोल रहा है। हाँ, मुझे तो नहीं लग रहा है यार ऐसा। Yeah, uh, arg sort, right? So the argument where I think it's like that only. Yeah. I think 12, 12th is the 12 lowest value. ना
12 Lowest is the value is lowest value. 12 is the 12th feature. I mean, not the 12th Yeah, feature. 12th feature is the lowest value. Yeah, it is the lowest value. Sorting is by default ascending, right? Yeah. okay, got it. वही तो बोल रहा हूँ 12 है is the lowest, 0 is the lowest value because Okay. p value is not negative. My bad. Sorry, so sorry. Then comes 9, Okay, then which is 2.12 e raised to minus 24, and then comes 6, which is minus 14 raised to मतलब 1.76 into 10 raised to minus 14. हाँ, क्योंकि वो लिस्ट 0 से स्टार्ट हो रही है, 7th वैल्यू पकड़ेंगे। बट स्टिल ठीक है, चलो ये 1296 होना चाहिए, ठीक है। हाँ, अब देन स्टिल कि यहाँ पे देखो 12 और 9 तो है, दिस इज प्रोलाइन इज 12 एंड कलर इंटेंसिटी इज 9, तो यहाँ पे ये हाँ, दोनों है, बट फ्लेवोनॉइड्स यहाँ पे 7th नंबर पे है, एक तो तो वही मैं कह रहा हूँ ना, अरे लिस्ट है तो पीछे 0 से से काउंट स्टार्ट करो होगी ना, ना, पीछे से काउंट करो, it तो starts from पीछे से 0. काउंट कर लो। हाँ, It 1 2 starts from 3 0. There are 13 values. वही तो बोल रहा हूँ, इट स्टार्ट्स फ्रॉम 0, लिस्ट है तो 0 से स्टार्ट हो 3 रही है, तो 4 7th वैल्यू ही 5 होगी ना। 6 7 8 9 10 11 12 ओके। अरे सही यार है। हम सब डूबने वाले एग्जाम में, मेरे को लग रहा है किसी को भी नहीं एंड आता। आई वुड जस्ट से कि कॉम्प्लिकेट करना ही क्यों है चीजों को, अगर हमें पता है कि स्कोर से हो जाता है, तो केवल स्कोर्स देख लीजिए, डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा दीजिए, और जो के लिखा Yeah, हुआ है उसके both are टॉप वाले giving the लिख दीजिए। same result actually. I don't know why they've given both scores and p values. It's giving the same जस्ट टू important. कंफ्यूज द टू पीपल लाइक मी। कंफ्यूज पीपल ना, हाँ एग्जैक्टली, टू कंफ्यूज Yeah, पीपल it's लाइक the अनुज की आर्क psychology. सॉर्ट से करेंगे हम तो, स्कोर से नहीं करना, बड़े लोग हैं। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, ये सवाल सबको समझ आ गया ना? Yes. हाँ, ये जो तो ऊपर वाला क्वेश्चन था, सॉरी 1 मिनट ऊपर करेंगे क्या? इसमें ये हुआ है ना कि 63.33, 109.01 और 16540.06 ये तीनों हाईएस्ट वैल्यूज थी, हाँ, बिकॉज k इक्वल टू 3 है ना, तो हमें सही है। 3 वैल्यूज को ही चूज करनी है। हाँ, इसलिए और हमने फिर ये नंबर देखा कि 63.33 किस नंबर पे आ रहा है। एग्जैक्टली। अच्छा, और उसमें से लिस्ट में से चूज कर लिया। हाँ, मान लीजिए कि 4 होता तो आपको 45 वाला और ले लेते। अच्छा, डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा दीजिएगा स्कोर्स को, और जो वो आए तो उनकी लिस्ट में वैल्यू देख लीजिएगा, पोजीशन मतलब। ठीक है। then next question, इसमें assume all the necessary imports x y the training data set, which of the following statement about the code are correct? ठीक है, एसजीडी रिग्रेसर बनाया एक और उसका ऑब्जेक्ट, ठीक है, पैरम वो बनाया डिक्शनरी टाइप, ओके, देन रैंडम रैंडमाइज्ड है, हाँ, ये याद रखना। हाँ, रैंडमाइज सर्च सीवी है, एंड आइट्रेशन इक्वल टू 10 और सीवी इक्वल टू 3 है। आई गेस इन्हीं दोनों पे क्वेश्चन होगा मैथ। ठीक है, तो उन्होंने एनाइटर का मतलब पूछा है। हाँ, तो एनाइटर अगर किसी को ना पता हो तो इसमें से जितने भी कॉम्बिनेशन आएंगे विच इज 4 3 which is 4 नहीं, which is 3 3 2 into 2 6 and 6 into 6 36 ना? 36, 36, yeah, हाँ, yep, 36 में से वो महाशय कोई तो 10 रैंडम उठा लेंगे अपने हिसाब से, सो इट विल ट्राई ओनली 10 कॉम्बिनेशंस। सो एनाइटर हमारा वही कंट्रोल करता है कितने कॉम्बिनेशंस ट्राई करेगा, number of iterations। नहीं, हाँ, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस वो ट्राई करेगा। हाँ, हाँ, the actual number of combination tried to fit is 20, ये भी नहीं, 36 again 36 है वो। The hyperparameter search space for alpha parameter follow a uniform distribution. Alpha, और 1 मिनट, वो 36 नहीं है, लाइक सॉरी, बट वो 36 भी नहीं आएंगे क्योंकि हमारा सीवी बराबर 3 भी है, सो और हम फिट कर रहे हैं रैंडम सर्च सीवी को, तो इसलिए वो 36 into 3 हो जाएंगे टोटल नंबर ऑफ फिट्स जो जनरेटेड होंगे वो। No, I guess. randomized means that is grid search, na? Like randomized means you're only taking the n-iter thing. हाँ, but we are talking about grid. अच्छा, हाँ, okay. हम Okay, टोटल but नंबर ऑफ still कॉम्बिनेशंस the number ट्राइड is इन द 30 फिट ना? की बात कर रहे हैं। It should be 30 ना then. That's why I told you randomized search CV वो याद रखना। हाँ, वो 30 तब भी 30 आएगा, मतलब वही 30 तो, है, 30 है, yeah. वही वो सीवी के हिसाब से आएगा वो तो, वही मैं कह रहा नहीं, number of combinations will not be 30 यार। नहीं, हूँ। tried in the fit.
It will be only 10. 10 combinations will be tried. Again वो English वाला चीज. No, this is not number of combinations. This is number times the fit will be called internally will be not even 20, it Right. will be 30. So the fit Number will of be called combinations is only 10. Number of combinations is 10. 100%. in the fit operation, but the fit operation में जो 30 आना चाहिए ना. अच्छा वो okay. 3 बार उसे क्रॉस वैलिडेट भी तो करेगा ना. सॉरी. The actual number of combinations tried in fit is 10, not 20. Okay. Actual number of times fit is called is 30. Okay. I think the English is really confusing. No Yeah, idea. this is you have to be careful. मैंने इसको discourse पे भी point out किया था. देखो क्या होता है. And the actual number of model is, sir? Is 10. Number of models is 10. Number of combinations is 10. Number of fit is 30. But now, see, this is the thing, Deepa, just remember in quiz 2, number of models was pointed out as 10. But in end term, everywhere, number of models is pointed out as 10 into 330. Okay, so I raised this Yeah, thing still the with confusion exists. Can you please no, clarify no. it once out? In the exact in on discourse, I talked to Sony, our Okay. instructor, and I Yeah. asked him that the English is not clear. He promised Okay. that in the end term exam, he will Yeah. explicitly make sure that we are asked the question correctly without Okay. any ambiguity. Okay. So here, if even in grid search CV, what is the number of models? Okay, so 36. firstly, let me tell you what is very clear. Number of combinations is based on the param grid. Okay, Parameters. Okay. number of fit is based on cross validation. Okay. Okay, Okay. number of models in, like I said, in quiz 2 was equal to number of combinations. In n term, it is number of times fit is called. What the heck? So The syllabus is changing in just 4 weeks. I don't know here. But right now in n term, Deepa, to answer your question, right now in n term, number of models is equal to number of times fit is called. Fit is called. Okay. As of now, yes, in the n term. Suppose if this question is asked in grid search CV, then the number of models would be 36 into 10 into 3. So no, Yes, not 10. 36 into 3. Right? 36 into 3, right? No item. Yeah. 36 36 into into Okay. 3. 3. You're right, Okay. absolutely. Thank you, sir. Thank you. That's what I Sure. want to clarify. Okay, sir. Okay. And the last option is squaring metric used for the search is negative mean square error. Why it is not? Okay, it is ये है correct. ना वो हाँ रैंडम हाँ नोट्स में ठीक है स्कोरिंग में Regression. नेगेटिव हाँ मीन स्क्वायर्ड एरर हाँ हाँ वाला ठीक भी. है ये और ये ठीक है. कोई Oh, कुछ पूछना sure. चाह रहा है शायद. नहीं. Yes, please. Anyone? Why? If anyone else, if you are not saying anything, then there are emojis option too. You can just thumbs up. Okay. Then इसमें k fold आया ठीक है. Then k fold में n splits equal to 3 और x train हर बार कितना होगा? Then this we have to which of the following cannot be printed. ठीक है. So k fold में अगर 3 है. Sorry to interrupt. Can you please go to the above question? Yes, Is yes. that number of times fit called internally and number of models are both same? In n term, yes, as of now. Okay. Okay. Thank you. Thank you. The thing you need to pay attention at is what is it saying, like the actual number of combinations tried or the total number of combinations possible. Okay. I just wanted to clarify, like from what I understood, like after the CV is done, you get the best set of parameters, and you're only fitting the model once, right, with those parameters. No. Fit is called It tries everything. to fit it on, yeah, fit is called every time, and then at the end, Refit after trying refit calls the final model. Refit, not fit. Refit will call the one that is best at the end. Okay, if refit equal to true. So if that parameter Okay. is there, only it will only fit only once. At Okay. the end, but even then fit will be called every time.
All fits will be called, score will be compared, and refit will be called on the best score. Okay, now it's clarified. Thank you. Okay. Then next question, k fold में and split equal to 3. So I guess this is the split. Okay. And test into training and x split x. What would be the possible? मतलब I okay. तो देखो एक तो ये या तो 2 होगा या तो सिंस इज ट्रेनिंग, तो ये इसमें सिर्फ 4 वैल्यूज वाला बचेगा, रेस्ट जो एल्स होंगे वो हो जाएंगे। तो ये 3 तो आई गॉट इट कि क्यों नहीं है। व्हाई 31, दिस? 31, 31, 31. अच्छा उसमें 2 बार ओके। 31 है। Like, what is the problem with the second option? अच्छा देखो ये जो है एन स्प्लिट, व्हाट इट डज कि ये जो 6 इसमें वैल्यूज हैं एक्स एनपी अरे में, उसको एन स्प्लिट क्या करेगा, एक उसको उसमें 3 हिस्सों में डिवाइड करेगा, ठीक है। इट इज लाइक दिस। सो एक एक कट यहाँ आएगा, एक कट यहाँ आएगा, दिस कट इज रैंडम, बाद में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो 2 वैल्यूज हमारी टेस्ट में रहेंगी और बाकी 4 वैल्यूज ट्रेनिंग में रहेंगी। एंड व्हाट इट इज आस्किंग कि ट्रेनिंग में क्या क्या वैल्यू होगी। सो सिर्फ 4 वैल्यू होंगे, वॉट एवर इट इज, बस जो उसकी लेंथ होगी वो 4 होगी, है ना। तो इसकी लेंथ भी 5 है, इसकी 6 एंड इसकी 3 है, दैट्स व्हाई these 3 are How is it incorrect. only 4? I didn't understand. I thought, okay, training, okay, like I thought that it just has to split it into 3 and okay, based on that, how is it chosen, how like which is train and which is test? ओके सो इन 3 स्प्लिट्स, ये देखो ये मान लो 3 स्प्लिट्स हैं हमारे, 2 2 के आ गए। व्हाट इट डज, इसमें से एक एक कोई भी उठा के रैंडमली स्टार्टिंग में से एक उठाएगा और उसको टेस्ट के लिए डाल देगा, Yeah, एंड yeah. बाकी 2 ट्रेनिंग के लिए होंगे। देन इन द सेकंड रन ये टेस्ट के लिए चला जाएगा और बाकी ऊपर वाले और नीचे वाले Yeah, ट्रेन के but लिए। why it can also be 3, 2, 1, right? I mean, number of splits equal to 3 only they're saying, right? No, it will split into equal parts. It's not like 3 to 1. It will be always same. The split, the size of split is same until or unless I guess there is not an option for that. But if there is, then we have to mention it. Okay. Let me just look at the options then. Yeah, okay. Yeah. So ये 3 तो यही गलत हो गए. The fourth one is as said कि ये इसमें 2 बार 31 आ गया. Even the length is 4, but इसमें 2 बार 31 आ गया, तो इसलिए incorrect है. वो वैल्यू है ही नहीं एरे में। हाँ. So and ये दोनों हो सकते हैं, these are possible operations, and so these 4 are correct options. Okay. ये वो भी हो सकते हैं. अगेन ये एसवीसी का क्वेश्चन है। Okay, when using the support vector classifier in scikit-learn with different values of regularization parameter C, how does the complexity of decision boundary change? ये तो क्लासिक क्वेश्चन है, ये हम क्विज 1 नहीं, क्विज 1 तो नहीं, क्विज 2 में बहुत बार किया ये तो। कुछ तो पता ये नॉर्मल क्वेश्चंस अभी छोड़ो, बाकी टाइम खत्म हो रहा है, लेट्स मूव टू। Okay, so larger value. मतलब if you think this is a complex question, it's fine. Otherwise, नहीं, if someone has a doubt तो वो सॉल्व करते हैं, It's अदरवाइज actually तो very easy, but sometimes like it could get confusing, like if you don't think clearly. That's Yeah, okay. Right. please go anyone. Please go through the. Please explain the C part once, and whatever it is possible, like higher, lower. Yeah, so a lower value of C means higher lambda parameter. So um, higher lambda means less overfitting. Less overfitting is uh, Complex is more complex is. a simple decision boundary. Yeah. Okay, yeah. Okay, and overfitting. basically higher C is equal to lower regularization. That's it. Just remember that much. High C, low regularization. Okay. Low regularization, more complexity. Bus. Yeah. Okay. Lower the value of C. हाँ, ये सिर्फ नोट डाउन कर लीजिए और इससे तो फिर वही है, लिख हाँ, याद कर लीजिएगा। हर्ष पे नोट डाउन कर.
नोटेड है भाई, ये चीज मैंने दोबारा से नोट नहीं करी, वो क्विज 2 के टाइम पे 2-3 बार लिख लिया था। I will I will use your notes at the end. Okay. So, uh, in which of the following scenarios split will not be made at node n? ठीक है. X और Y में डेटा फ्रेम इंपोर्ट किया. ठीक है. X ट्रेन बाय ट्रेन में स्प्लिट दिया 0.20% के साथ. Then decision tree classifier बनाया. Minimum sample split is 5. Minimum sample leaf is 3. Random split equal to 5. Okay. The sample node. So the split node will not be. Okay. The number of samples at node n equal to 10. If a split, it will result in 2 nodes on the left and right. Okay. Okay. Like what I'm getting कि जो n है उसको ये टेस्ट और उसमें कर रहा है. Test or train में, that's why it is left or right. Am I correct? Or See, number of samples at node is equal to 2 10. and 8 means, yeah, 2 and 8 Okay. means it's, And if it is 2 and 8, min sample leaf 3 will not work. So this cannot happen. yeah, I also had the same. Yeah. yeah, can you please repeat? Okay, so now there are two things to notice here. Min sample split is 5, sample leaf is 3. Min sample leaf 3 means every node has to have at least 3 leaves, otherwise splitting will not happen. Now, if you keep Okay. that in mind, result in 2 nodes with left child and 8 nodes in right child means that minimum of 3 is not possible in the first option. In the first Same in the option. fourth. Similarly in the fourth one. Okay, got it. Okay, and in the second one, it says 3 and 3, which is allowed, and n is equal to 6, which is min sample split is 5. So n equal to 6 is good, n equal to 12 is good, 5 and 7 is good. Now, number of samples at node n equal to 4 means go up. Min sample split is 5, go up, up, up. Min sample split is 5 and n is equal to 4. So if n is equal to 4, splitting will not happen at all. Okay. Okay, got it. Min sample split is this. Okay, so the value of min sample split वो मतलब n उससे बड़ा होना चाहिए, that should be greater or equal to. और ये मिनिमम सैंपल स्प्लिट से सैंपल लीफ से ये बड़ा होना चाहिए. नोड का नंबर. Okay. The next which what will be the output of the above code? Enter the answer up to 1 decimal point. ठीक है. Scalar 70 से 80 ये रहा. Predicted ये रहा. CLF dot score. Okay. So it is logistic regression. ठीक है. एक करेक्ट, 2 करेक्ट, 3 करेक्ट, 4 करेक्ट, 5 Accuracy itself, right? I mean, 6 that's correct. only one. Yes. So these 6 are correct. So it is 6 by total. But, 10. yeah, so it is 0.6. Why they have to write point decimal place? Okay. So it's 0.6. And in this k neighbors classifier है, ठीक है. K neighbors classifier n neighbor equal to 7, metric equal to Euclidean, or weights equal to uniform, and that predict X test. So 2, So this is a classic case of underfitting, which I gave an example of. yes. Yeah, more ones. Yeah. There will so always be equal So it to will 7. will always be 1. Yeah. Yes, that will always be 1 क्योंकि यहाँ 3 ही सिर्फ 2 हैं and neighbor 7. So अगर बेस्ट केस ये होगा कि 3 और 2 सिलेक्ट हो जाएं बट उसके तब भी बाद मेजॉरिटी 1 की होगी. Yeah. Okay. then what will be the output of this code? Len of knn dot classes. Okay. So this is extend by trend k neighbors and neighbors equal to 3. knn dot fit this then len of knn dot classes.
2 हो जाएगा classes ना, बेसिकली y zero 0 or और 1 one. में है। 0 or 1. So it will be 2 classes. There will be 2 classes only. And then how many decision classifier models will be trained internally? So grid search CV है, उसमें random forest classifier है. So n estimator is equal to 10 and CV equal to 5. Okay. So यहाँ से तो सिर्फ what it is, यहाँ सिर्फ 10 वो होंगे ना ट्रेन इसके अंदर. नहीं, इसमें टोटल पूछा है ना, तो पहले तो हाँ 10 into 5 होगा, और साथ में हमें वो रेंज का निकालना हाँ, पड़ेगा कि वो रेंज रेंज का उन्होंने निकालना दी है। पड़ेगा ना. सो रेंज इज 1 3 1 to 20, वो भी 5 2 के इंटरवल पे 5 7 9 and 11 up to 10 90. वैल्यूज आएगी, 10 वैल्यूज, 13 15 17 and 19. Yes, it is 10 10 values. वैल्यूज. सो वी वुड डू 10 into an estimator's 10 into CV5, which would be 500. So 10 into 5, it's 500. Okay. ये ऊपर वाला क्वेश्चन कैसे हुआ, मेरे को समझ नहीं आया थोड़ा. कौन सा? हाँ, मैं वही बोल रहा था, थोड़ा तेज चढ़, अगर किसी को समझ ना आए तो बोल देना. कौन सा? के नेबर्स वाला? नहीं, हाँ, ये कौन सा था, मैक्स डेप्थ वाला ना? हाँ, ये वाला. नेक्स्ट वाला, अच्छा हाँ, यही यही वाला. हाँ, कौन सा वाला? यही वाला ना? हाँ, जो अभी सॉल्व किया है. तो इसमें उन्होंने मैक्स डेप्थ का पैरामीटर दिया है, वो रेंज डिफाइन की हुई है, वो नंबर ऑफ, वो सिर्फ 3 पैरामीटर्स नहीं है, वो एक रेंज डिफाइंड है वो. और वो रेंज ऐसे डिफाइन करते हैं कि 1 to 2 कहाँ से कहाँ तक है और कितने कितने के इंटरवल्स पे है. तो दैट इज अच्छा. 1 to 20 इन द इंटरवल ऑफ 2, तो इसलिए दो दो के इंटरवल पे उठा लेंगे, 1 3 5 7 9, तो ऐसे करके 19 तक. ओके. और तो फिर ये 500 कैसे है? तो हमें 10 वैल्यूज मिलेगी ना 1 to 20 में, 2 2 के इंटरवल पे, राइट? हाँ, तो 10 वैल्यू वो, एन एस्टिमेटर 10, तो 10 into 10 100 हो गए, और सीवी 5 है, तो 100 into 5 500. ठीक है. अगर इसी में पूछता कि एक्चुअल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस कितने बनेंगे तो वो फिर चेंज हो जाएगा, ना वो फिर भाई. बस 100 ही होगा. वो कैसे निकलेगा? कॉम्बिनेशन इसमें इसमें कुल बनेंगे ही नहीं कैसे? देंगे. इसमें कॉम्बिनेशन होंगे कहाँ? एक ही पैरामीटर है ना. Okay. नहीं, मैक्स स्टेप तो बनेगा ना, मैक्स स्टेप तो चेंज हो रही है ना उसकी वैल्यू हर बार. हाँ तो बस एक ही वो आएगा. Combinations हाँ एक ही बन. will be तो just टोटल 10. नंबर ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशंस कितने होंगे वही तो मैं बता रहा हूँ. There are 10. No. हाँ okay, got it. So it is 10. ठीक है. Then the next question. इसमें क्या करना है? वन ये आउट लगा दिया, फिर लीनियर रिग्रेशन. ओके, दिस लास्ट क्वेश्चन. ठीक है. सबसे पहले कोई तो डेटा है इन क्विज डेटा 2 का है फ्रेम. यार, हाँ. ये तो सो क्विज 2 का वही क्वेश्चन है. Can you please explain this question in English? okay, not an issue. So they have applied this. So they have stored x and y. So it the left part from this blue line will be x, and right part is y. And thereafter, what they will do, they just apply the linear regression. Before that, they have applied the one-hot encoding on this car color. So what will actually happen? There will be three more columns in this, which is car black, car blue, and car red. And on the basis of that, so it is black, it is blue, uh, and it is red. Third one is. Okay. Now what it will does, if your car is black, it will for 1, then blue के लिए 0 0, then for blue it is 0 1 0, and same for red 0 Basically, 0 whatever the value 1 is, it will make that one, and all other values would be 0. 0. And thereafter what it does, it will ask ki, how many print the coefficient, number of coefficient in there. Okay, and what it asks, how many accidents per 1,000 driver happen for 20 age driving a blue car. So for a blue car, if we say, so this is for the age, this coefficient is for the age, and this one is for the black, then this one is for blue, and this one is for the red.
and we can see the serial here. So if the car is blue, then these two value will be zero now. The black and the red one. Yes. Yes. So these both will be zero. The black and red one, these two will be cancelled out for this question. And what would we do is just multiply 1 with this and 0.32 with the age, and we'll get our output. Let me check this. There's no scaling applied. Plus intercept. Yep, plus intercept. Sorry. Yeah. Yeah, no scaling applied. So you will, if you multiply 0.32 by the age, it is 25. 0.25. Yes. So 0.32 into 25 is 8. Minus 4.88 minus 4.88, it is 3.12 plus 70.75. So it is 74. 73.8, 70. 73.87. Yeah. Yeah, so that's the answer. Can you please show the calculation once? Uh, okay, so okay, okay, so 0.32 into 25, then ze- 0 minus 0.3 4.55. 0.32 into 25 Yeah. plus Plus 0 minus. into minus 4.45, 4.55 plus Mm. 1. 1 into minus 4.88 plus 0 into this thing 9.44, so it is 0, Yeah. and plus this intercept 70.75. Okay, I That's think all. Oh, yeah, okay. Thank you. yeah, Thank you so much. yeah, so it is 73.87. Now to improve the given model, which of the following pre-processing steps should you suggest? So okay, what I have checked कि in the scaling तो नहीं लगाई, because this should be like age is like scaling, where we can apply scaling, it will always increase the model performance. It will never decrease the performance of the model. Yes. You know, so we don't need to apply ordinal encoding or label encoder, because we have already applied one out encoding on this, and we don't have any numerical categorical column. Categorical data. Yeah, so we can't apply this and this one as well. And these two are scaling, and these both can be applied on numerical data, so we can apply any of them. Okay, so I think that's this paper. Anyone have any questions regarding this paper, like किसी को September कोई भी 23? डाउट है पूछ लीजिए. And coming to the question that Arsbai asked. So this is a paper of, okay, I couldn't find वन that. हॉट encoder जो होता है वो किस पे लगता है? One hot Categorical. encoding. देखिए किसी Categorical. भी टाइप की एनकोडिंग आप वर्ड्स पे लगाते हो, वर्ड्स या लेटर्स, मतलब कि कैटेगोरिकल डेटा, क्योंकि नंबर्स को ही नंबर्स में एनकोड करके क्या करेंगे ना, Okay, कैटेगोरिकल को this करेंगे. is my counter question, or say something. What if we apply one hot encoding to a numerical column? हाँ, ये चीज आप मेरे से पूछ रहे थे. Yeah. नहीं, तो हम जो नीचे वाला क्वेश्चन है, लास्ट वाला क्वेश्चन है, उसमें Yes. पूछा गया कि हम क्या-क्या अप्लाई कर सकते हैं. तो हम ऑर्डिनल एनकोडर भी अप्लाई कर सकते हैं कैटेगोरिकल डेटा के लिए, लेबल एनकोडर भी अप्लाई कर सकते हैं. No, सी एक second. Okay, उन्होंने yes. शायद बोला है कि मतलब कौन सा विच ऑफ द फॉलोइंग प्री प्रोसेसिंग स्टेप यू सजेस्ट, तो ऑलरेडी यहाँ पे लगा हुआ है ना, वन हॉट एनकोडिंग उन्होंने की Not हुई the है. reason. Actually, it is used for, like, if you are rating something, so 1 star, 2 star, 3 star, 4 star, 5 star, like good, bad, worst, that condition. So that's ordinal. ये स्टैटिस्टिक्स में पढ़ा था शायद हम लोगों ने. हाँ, The exactly. label नहीं, इसमें नहीं encoder था. means the label has to be categorical. Here, the label is not categorical. So, No, no, label encoder is just same as ordinal encoder, if I'm not wrong. no. It's not applied to features, right? It's applied to labels, right? That's what I remember. तो वो पहले वाला लॉजिक गलत है क्या अनुज भाई, जो आपने बताया था कि मतलब पहले से वन हॉट एनकोडिंग लगी हुई है इसलिए और कोई हाँ, एनकोडिंग नहीं 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 नहीं, लगाएंगे.
नहीं ऑर्डिनल तो इसलिए नहीं लगाएंगे क्योंकि हाँ मतलब वो एक लॉजिक सही है, बट ऑर्डिनल तो इसलिए नहीं लगाएंगे लेबल क्योंकि एनकोडर जो है ना 1D डेटा पे लगता है। ओके हाँ एग्जैक्टली, लेबल इनकोडर 1D डेटा पे लगता है, ऑर्डिनल 2D पे लग जाता है, बट दे वो बोथ वर्क्स एज सेम। सो दोनों ही ऑर्डिनल टाइप का काम करते हैं। वर्किंग सो सेम है, हाँ, तो सो वी बस डोंट हैव एनी डेटा टाइप ऑर्डर, उनके डिफरेंट है। ऑर्डर हेयर एग्जैक्टली। तो यहाँ पे कोई ऑर्डर नहीं है हमारे पास for this, like black, blue or red. These are different colors, but they don't have any order. Like this one is the higher top rated or this one is low rated. That's why we can't apply these two here and can apply this. Yeah, that's why. Any other question? मेरा डाउट सॉल्व कर रहे थे ना, आखिरकार मेरी याद आ गई थी, तो बताइए। अरे नहीं, आपका डाउट मिल नहीं रहा है। I couldn't find your doubt. Like the paper पूरा है नहीं ऊपर वाला. That's why. Yeah, just can anyone please clarify my doubt? What if I apply one hot encoding to this On numerical? numerical data. Yeah, so what will happen? What do you think will You happen? can apply, it will First encode. tell what you think will happen. No, What I actually think it is will happen. apply. If One I encoder will apply for suppose, numerical features also. okay, so what if I take this like It we will take have 3 unique values. 19, 1 and 24 is another value and 30 My is 19, guess another is value. 24, the 30. first option No, is wait, that wait, it wait, is wait, not wait. Everyone, Anuj is the one who asked the doubt. Let him first answer, then you give your suggestions. Okay. So, agar if we have this data like 19, 20 and 24 and 30 वाला this thing, so what it will do, यहाँ पे एक 19 वाला कॉलम बनाएगा, एक 24 वाला बनाएगा, एक 30 वाला बनाएगा, and same do as label encoding what it does कि 100010. Your answer is correct. Okay. Okay, thank you. Okay, anyone else or should I stop the recording? Okay, so I'm stopping the recording.